the live session. Again, this is this 26th session. So every Sunday I come live at 12. So please keep joining and do not miss any session. We may change the time the next Sunday. If we do not, then I will keep informing you and you'll get to know. But please join me live every Sunday. See, this is all about question and answer. So I'm not going to teach you anything new, but I would like to answer to those all questions which you ask me. So keep asking me the questions, and we are about to start the session in a while. So good afternoon, everybody. I've said it properly. Good afternoon, Danish sir. This is always quite interesting. So I'm ready for answering to all the questions what you ask. Good afternoon, Prerna Chan ma'am. Good afternoon, Kiran ma'am. I hope you all joined the session till the end. Good afternoon, Jayashree ma'am. Nishant sir, good afternoon. Now please start asking the questions without making it late. The questions, whatever come to your mind related to the English language, you should ask me. I hope I'm audible properly to everyone. Neha ma'am, good afternoon. It's always good to see you live. As I always say that keep some questions with you, whatever questions come to your mind the whole week, and then you should ask those questions. Good afternoon, Deepika ma'am. Use of could, would. I do not understand could and would. Okay, that's very good that you've asked me the question. Good afternoon, Diksha ma'am. See, could is used at some more places which you should know. एक तो can की जगह पर could use होता है in the past. Like जब आपको कोई भी काम करने की ताकत या power आपके पास थी past में, then you can say I could do it. और अगर आप कोई काम नहीं कर पाए यानी ताकत नहीं थी तो I could not do it. Then I should say I could not do it. And could use होता है जब आप सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति से अगर हमें रिक्वेस्ट करनी हो या परमिशन लेनी हो किसी भी काम को करने की, तो हम लोग कैन आई, कुड आई और मे आई यूज करते हैं जनरली. सो व्हेन यू आस्क अ पर्सन कि मैं आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, इफ इट इज कैजुअल रिक्वेस्ट, और अगर सेमी फॉर्मल है तो कुड आई कम इन, और अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट है तो मे आई कम इन. सो कुड के यूज जनरली दो केसेस में ज्यादा होते हैं. वेयर एज वुड तीन जगह पर ज्यादा यूज होता है. एक तो इन प्लेस ऑफ विल फॉर गिविंग रेस्पेक्ट इन द फ्यूचर, एंड वुड इज ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट इन प्लेस ऑफ यूज्ड टू. क्योंकि यूज्ड टू का एक्चुअली यूज बहुत ज्यादा किया जाता है. बिकॉज वेन एवर यू टॉक अबाउट एनी पास्ट स्टोरी, तो हम लोग यूज्ड टू बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जैसे मैं कोई भी काम पहले करता था, आई यूज्ड टू डू इट. सो इन प्लेस ऑफ सेइंग आई यूज्ड टू डू इट, यू कैन ऑल्सो से आई वुड डू इट अर्लियर. एक वुड यूज होता है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में, जब हम लोग कंडीशनल क्लॉजेस को यूज करते हैं, यानी इम्पॉसिबल इमेजिनरी सेंटेंसेस फ्यूचर में. इफ आई वेंट टू द मून आई वुड स्टे देयर, तो वुड का इस्तेमाल वहां पर भी किया जाता है. तो वुड इज यूज्ड एट थ्री प्लेसेस नॉर्मली, एंड कुड इज यूज्ड एट टू प्लेसेस.
I hope you must have understood. And if you've got any other doubt, then please ask me. Pre-session and pro-session, both are different. Pre-session and pro-session. So you can say in that way, pre-session and pro-session. The pronunciation, these two words. Good afternoon, Priyanka ma'am. Good afternoon, Shahid sir, Swapnil ma'am. Please ask the questions now. As I've already told that please be ready with the questions and keep asking me the questions. You must be having a lot of questions. Sometimes some questions do not click to our mind, but I have already asked and requested everyone that you should keep those questions with you. You can note them into your mobile or you can write them into a notebook and then you can ask me on Sundays. I come live on Sundays just because of this reason so that I can solve your all questions. So, whatever doubts you have, please keep asking me the questions. By now, only two questions have been asked by Danish sir and Nishant sir. I expect more questions from others as well. Joining the live will only benefit in that case when you ask a good question. See, that's what I always say. Somebody asks me that who is a good student? A good student does not mean to be intelligent or genius. A good student means a person who's focused towards studies and asks more questions. So that student is called a good student. How to translate Hindi to English? You do not need to translate. First of all, you should understand this. You do not need to translate. You just need to have the sense of the sentences. Then you can speak English properly. और ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करना नहीं जानते हैं. बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी बोलते आ रहे हैं. But we need to improve vocabulary. You can listen to my videos related to that. If you want to improve your grammar, I've got a lot of videos which I've already uploaded on YouTube. So you can listen to those videos as well. And the most important thing that English or any language in the world can be learned by talking to people more. So converse with people a lot whenever you get the opportunity. And even if you do not get the opportunity, try to get that opportunity. Try to create that environment atmosphere with you so that you can speak in English with everyone. So you should try to create the environment around you where you talk to people in English more. That will benefit you a lot. But if you think that I would like to translate the sentences from Hindi into English, then you're not going to learn any language. It will be very tough for you to learn the language. I hope you must have understood. Did you call me last night? See, it is wrong. Did you के साथ called नहीं आ सकता है. Did is already a second form. An English rule says once a second form comes in a sentence, second time second form does not come in the sentence. So we should never say like this, did you called me? Did you call me? Most of the people make this mistake initially when they start speaking in English. They are not able to judge this. तो वो लोग क्या करते हैं, टू सेकेंड फॉर्म्स का एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं. So I did not called you is wrong. Did you called me is wrong. I called you is correct because then you are talking about the past. But did is already there, so you cannot use the second form again there. The difference between much and more, much is used for uncountable nouns and uncountable things. More जो countable होती हैं उन्हीं के लिए यूज किया जाता है. जैसे much water, much sugar, more shirts, more glasses. So यहाँ पर आप much glasses नहीं बोल सकते हैं. So जो uncountable है यानी गिनी नहीं जा सकती हैं, there you need to use much, and the thing which is countable जो गिनी जा सकती हैं, there you should use more. You can even make some sentences as well. How can I start creating stories in mind directly? See, first of all, start reading. Please understand. To enhance your elaboration skills, you need to have some certain knowledge as well. If you do not have knowledge,
then you may not be able to cook up the stories as well. So for this purpose, start reading the newspaper. Elaboration skills are generated with the help of knowledge more. So how to gain knowledge? By reading books, by reading English newspaper, by talking to people. And especially when you talk to people, you're not gossiping, you are discussing some relevant topics. Then you will be able to, have those things into your mind by which you can create and elaborate the things. Second step will be that you need to understand how to elaborate. So इसकी हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए और उस पर 4 या 5 लाइन्स बनाना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, यू हैव टेकन न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर पर आपने यू हैव मेड 4 और 5 लाइन्स। जब ये होने लग जाए, देन यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग स्टोरी। स्टोरीज 2 तरीके से बनती है, एक तो फेक, जो इमेजिनेशन में होती है, एक ओरिजिनल, रियल होती है। So you can add sentences to that. Initially, you can start working with your fake stories. Or see, how do we start creating stories? Which is very simple. Earlier, people started writing blogs. Now, people do not write blogs. Now, bloggers mean creating reels on Instagram. But earlier, bloggers used to be those who used to write stories. And how to create stories? You can talk about your past incidences, but you need to understand to elaborate those sentences as well. अगर आप ये बोलते हैं कि I went to market, an accident occurred, I saw the accident, an ambulance came after a while and took the injured person to the hospital and I came back. Now, एक छोटा सा इंसिडेंस मैंने बता दिया, बट अगर मुझे elaborate करना आता है, then I can say I had planned to go to market in the morning, but unfortunately I got late. Then I finished my work. It was 5 o'clock around. I took my bicycle, since I wanted to buy something from market, and I went to market. I rode the bicycle slowly because I'm afraid of riding the bicycle on the roads. There are chances to meet with accidents. As soon as I reached market, I saw a lot of traffic was there. The traffic was sluggish because it was the prime time and people were there to do the shopping. When I reached there, I saw an accident occurred and people were standing around the injured person, but nobody was there to help that person. And India, or I think in most of the countries, it may be happening that people do not help others, they only talk. And that's what I felt there. I also tried to go there, but since there was a traffic jam, so I could not reach the point. I also wanted to help, but I just had a bicycle. That's why I thought that how would I be able to help? I was thinking of calling the ambulance, but somebody had already called in the ambulance, and ambulance came there after a while. Then also, some people were not ready to help the person. But after a while, 2 or 3 persons lifted the injured man and kept it in the ambulance. I saw the incident and I thought that how many accidents occur in India? And this may be because people do not drive slowly, they drive rashly. So we have to be very careful how to drive in a proper way. Now imagine this, the same incident which I had just told was in 5 lines, and now I have elaborated. So when you have got elaboration skills, you can create stories properly. And whenever you make any sentence, you have to find another sentences related to those sentences. Then you will be able to elaborate easily. And everybody should have elaboration skills. A good communicator has elaboration skills, I tell you. So I hope you must have understood. How can I correct my pronunciation? By listening to the words initially. See, the easiest way, I've already made a lot of videos on pronunciation. I'm going to upload a lot of videos more in the future. So you listen to the words. Initially, you need to listen to the words or people. Later, you start understanding on your own how to pronunciate the words properly.
Was were used in past, had verb third form past tense, but what is the difference? See, was were या तो नॉन एक्शन के या यूज होता है, नॉन वर्ब्स के साथ यूज होता है, या अगर पास्ट में was और were यूज हो रहे हैं तो वो पास्ट में कंटिन्यू वर्क को बता रहे हैं। कोई भी काम आप पास्ट में कर रहे थे किसी भी टाइम पर, तब was और verb का यूज किया जाता है। was सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, थर्ड पर्सन के लिए, और verb प्लूरल के लिए होता है। यू के साथ भी हम लोग were यूज करते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि कई बार लोग यू के साथ was लगा देते हैं बोलते वक्त, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट। फॉर इंस्टेंस, I was taking tea when you called me. We were taking tea when you called me. तो यहां पर आप we were take tea या we were taken tea नहीं बोल सकते हैं। had का इस्तेमाल तब होता है जब पास्ट में दो काम होते हैं। जो काम पहले होता है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है, पर टेंस को हम लोग छोड़ देते हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज हैड। तो जब दो काम आप पास्ट में करते हैं तो जो काम पहले होता है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और जो बाद वाला काम होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। I had taken tea before you called me. Now, please understand. I was taking tea when you called me. I had taken tea before you called me. Now, the difference is कि आपने जब कॉल किया तब मैं चाय पी रहा था, यानी उस वक्त कोई काम हो रहा था, पर्टिकुलरली काम जारी था, चल रहा था। बट आई वॉन्ट टू टेल कि आपके कोई काम करने से पहले वो काम फिनिश हो चुका था, खत्म हो चुका था। आई हैड और उसके बाद when वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। देन वी से आई हैड टेकन टी बिफोर यू कॉल्ड मी। I could have gotten food prepared. See, it is correct. पहले लोग गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन ही यूज करते थे, आज से 20 साल पहले लगभग लगभग। लेकिन लोग आजकल गेट की थर्ड फॉर्म को गॉट ही यूज करते हैं। गेट, गॉट, गॉट। पुराने टाइम में गेट, गॉट, गॉटन हुआ करता था। आई कुड हैव का मतलब है कि कोई भी काम आप कर सकते थे पर आपने किया नहीं। आई कुड हैव या यू कुड हैव, जो काम आप कर सकते थे, व्हिच यू कुड डू बट यू डिड नॉट डू, which you could do but you did not do, then we use could have. So I could have got food prepared, यानी मैं खाना बनवा सकता था पर मैंने बनवाया नहीं। I could have gotten भी यूज होता है, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, पुराने जमाने की बुक्स निकालेंगे तो आपको gotten ही दिखाई देगा। हालांकि जो अब नए राइटर्स हैं वो got ही यूज करते हैं थर्ड फॉर्म को। Difference between using rather and reason being a correct place, as both sound similar in meaning. No, both are different. Both are actually different. Reason being is used for telling the reason. In place of using because, we use reason being. Rather, जब आप इन्हें कोई भी बात कही पर आप उसको एक और बात कहना चाहते हैं, उसका रीजन नहीं बताना चाहते। Like, I went to college, rather I studied. I get up early, rather I do the exercise. So यहाँ पर आप rather use कर सकते हैं because you want to add one more sentence to the another sentence which you had already spoken before that sentence. Then you can use rather. रीजन बीइंग का यूज तो सिर्फ बिकॉज की जगह पर किया जाता है, फॉर टेलिंग द रीजन। लाइक समबडी आस्क्स यू, व्हाई डिडंट यू कम yesterday, and you say reason being I had an urgent piece of work. I had an urgent piece of work. So यहां पर reason being इसलिए यूज किया because you wanted to tell the reason. बिना सोचे समझे कुछ मत करना। Think twice before you do anything. Think twice before you do anything. You mean to say कि एक बार जरूर सोच लेना। देखिए, every sentence cannot be translated or should not be translated in the same context as it is spoken in Hindi. But when it comes to the English language, जब भी आप किसी को कहते हैं ना एक बार और सोच लो, then we say think twice. Think twice. अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने दो बार ही सोचा है या तीन बार ही सोचा है। Think twice का मतलब है कि आप अच्छी तरह सोच लो। So think twice before you go ahead or before you do any work. Good afternoon, Saurabh sir. Leap before you leave, or don't do anything without thinking. Yeah, that is also correct. Leap before you leave. Good. But sometimes word also used after singular subject. Yes, it is used. जब हम लोग hypothetical sentences बनाते हैं और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है फ्यूचर में, यानी आप जो कर नहीं सकते,
तो हम लोग वर यूज करते हैं, जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड डू समथिंग स्पेशल फॉर इंडिया, और आई वुड डू द सेम एज मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन डूइंग। तो यहां पर आप आई के साथ वर यूज कर सकते हैं, बट इसके अलावा कहीं पर भी सिंगुलर पर्सन के साथ वर नहीं यूज किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट, ई एक्स से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनमें एग्जाम्पल, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, ई की आवाज आती है, और जो किसी भी चीज को स्वीकार करना होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, किसी भी चीज को स्वीकार करना एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। Like if I were a bird, I would fly in the sky. That's absolutely correct. If I were a bird, I would fly in the sky. सी सिंपल पास्ट का मतलब होता है कोई भी काम आपने पास्ट में किया तो आप सिंपल पास्ट यूज करते हैं, लाइक आई टुक टी, आई सॉ अ मूवी, आई गॉट अप, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रंच। तो जो भी आपने काम पास्ट में किया सेकंड फॉर्म यू, ये सिंपल पास्ट होता है। बट व्हेन इट कम्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस, देन यू ऑलवेज से आई हैड टेकन टी बिफोर आई टुक ब्रेकफास्ट। सो व्हेन यू डू टू पीसेज ऑफ वर्क इन द पास्ट, तब हेड और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, अदरवाइज नहीं लगाई जाती है। दिस इज द सिंपल डिफरेंस। अगर आप एक ही काम बताते हैं तो आप सिंपल पास्ट यूज करते हैं, इसलिए उसको सिंपल पास्ट कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि ऑलरेडी वो परफेक्ट था, पहले ही हो चुका था, फिर उसके बाद एक और काम हो गया, देन वी यूज had and verb third form. So this is the basic difference between past perfect and simple past. And you should make more sentences related to them. Then you will get the hang of all the things. See, by listening to the things sometimes will not help you always. You're more confused in something, then you can elaborate, or you should make more sentences using those sentences. So I hope you must have understood that. Does anybody have any other question? See, it's always good to answer, but when questions are there, and keep asking me questions. As I've already told you, do not try to bring question to your mind only at the time of the live session. This is a general habit. As I've already given you time, that please try to prepare your questions with you before the live classes so that I can answer. And if we are done, then it's okay, no problem at all. Is there anyone who would like to ask any question? Or should we end up the live session today? So thank you very much for joining the live session. I'm really joyous seeing you all. Would I explained, Saurabh sir, you I think joined late, but I'd like to explain to you again. Will की जगह पर एक तो would use होता है for giving respect to the person. जैसे somebody asks me, will you attend the party? I would attend the party. Now, why have I have used would here? Because I want to give respect to the person. एक would use होता है past में in place of used to. जब आप कोई भी काम पास्ट में करते थे तो आई यूज्ड टू डू इट, एंड इन प्लेस ऑफ सेइंग आई यूज्ड टू डू इट, यू कैन आल्सो से आई वुड डू इट अर्लियर। एक वुड यूज होता है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में, फ्यूचर में, इमेजिनरी सेंटेंसेस में। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वेंट टू द मून आई वुड स्टे देयर वी यूज वुड। I completed my work. Is it a simple past tense? Yes, it is a simple past tense. I completed my work. So thank you very much for attending the session. Nice being with you all. Take care. See ya. Enjoy your Sunday and study also. Take care. Okay, Saurabh sir has asked difference between till and yet, ought to and should. Okay. See, till
हम लोग जब समय की सीमा को बताते हैं, टाइम लिमिटेशन बताते हैं, तो टिल यूज किया जाता है। जैसे आई डू माई वर्क 9 o'clock, आई वॉज देयर टिल 7 p.m., आई केम टिल 8 o'clock। सो यहां पर यूज किया जाता है जब टाइम की लिमिटेशन बताई जाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉज देयर टिल यू केम, तो मैं तब तक था जब तक आप आए थे। देयर ऑल्सो यू कैन यूज टिल। येट जनरली यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट टेकन टी येट। सो यू मीन टू से, जब आप हिंदी में अभी तक का सेंस देते हैं, इंग्लिश में वो येट यूज होता है। येट नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में भी के लिए स्टिल का यूज करते हैं। स्टिल, यू आर हियर स्टिल, स्टिल। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस में स्टिल का यूज किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में येट का यूज किया जाता है। शुड किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य या ड्यूटी याद दिलाने के लिए यूज करते हैं। पर जब आप किसी भी व्यक्ति को इनडायरेक्टली कर्तव्य ड्यूटी याद दिलाते हैं, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू डू नॉट वांट टू हर्ट द अनदर पर्सन, मोरल ड्यूटी याद दिलाते हैं, तब ऑट टू यूज किया जाता है। जैसे, you ought to respect your parents. Please understand this thing. You ought to respect your parents. And why did I say this sentence? Because मुझे बताने की जरूरत नहीं है that you should respect your parents. You should respect your parents का मतलब तो है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ आई से यू ought to respect your parents, तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो जो आपको करना चाहिए, जो आपका खुद मोरल ड्यूटी है, देन वी यूज ऑट टू। पर जब आप किसी व्यक्ति को कर्तव्य ड्यूटी याद दिलाते हैं, देन वी यूज शुड। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू। बोथ आर यूज्ड इन द सेम वे। ought to or should. No, both are not used in the same way. Only for giving, see, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, इसको समझिएगा। आप सिर्फ किसी को कर्तव्य ड्यूटी याद दिला रहे हैं तो शुड यूज कीजिए, पर जब आपको इनडायरेक्टली कर्तव्य ड्यूटी याद दिलाना है तो ऑट टू यूज कीजिए। मॉरल ड्यूटी याद दिलानी, यानी जिसमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको करना चाहिए वो काम खुद। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अब मैं आपको ये सिखाऊं कि यू शुड हेल्प द पर्सन, ये गलत है कि मैं क्यों सिखाऊं आपको, ये तो आपको खुद करना चाहिए। यू ऑट टू हेल्प। सो कोई भी ऐसा काम जब आप मॉरल ड्यूटी याद दिलाते हैं, देन वी यूज ऑट टू। ऑलवेज एंड फॉरएवर, सी, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। फॉरएवर का मतलब होता है एवर, जब तक है तब तक, लास्ट तक। ऑलवेज में कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। फॉरएवर का मतलब जब तक है तब तक। फॉरएवर, ऑलवेज, हमेशा, फिर उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ऑफ द टाइम। I will start the GD session, sir. Let us get the students for GD session. I am also trying to start that. I may create the WhatsApp community. I think that will be better for starting the GD session. I should respect, or I ought to respect. See, you ought to respect elders. Now, I should respect का मतलब आप अपने आप को सिखा रहे हैं कि करना चाहिए ये काम। I ought to respect elders, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये आपकी मोरल ड्यूटी है, आपको करना ही है ये तो। Then we use ought to. So, Saurabh sir, I would start. Let me think of it. How could I start that? You could have, कोई भी काम पास्ट में आप कर सकते थे पर आपने किया नहीं, इंटेंशनली। शुड हैव, जब आप पास्ट में कर्तव्य ड्यूटी याद दिलाते हैं, देन वी यूज शुड हैव। जैसे आपको कोई काम करना चाहिए था, तब हम लोग शुड हैव करते हैं। जैसे आपको कल मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मेट मी। एंड इफ आई से यू कुड हैव मेट मी, आई मीन टू से कि आप मिल तो सकते हैं, फिर आप मिले नहीं। एज वेल एज, जब हम लोग दो चीजों को कनेक्ट करते हैं, तब एज वेल एज यूज करते हैं। ही एज वेल एज आई आर गोइंग, तब हम एज वेल एज यूज किया जाते हैं, यानी उसके जैसा कोई भी चीज है।
सेम चीज किसी के साथ है, then we use always as well as. So thank you very much. Nice being with you all. Take care. Bye bye. See you the next Sunday. Be ready for the session.